Hello and a warm welcome to our special broadcast, Lest We Forget, on a day which marks 10 years of the dastardly Mumbai attack, which killed almost 200 people. I'm Neelu Vyas, and in our continuing focus on the memories of the 26/11 attack, we've been reliving various aspects of the terrorist attack which shook India's conscience. If you all remember, the counter-terrorist operations of 26/11 were beamed live on all TV channels 24/7, giving a blow-by-blow account of what was happening. Now, these images that were broadcast not only helped the terrorists, but also endangered the lives of innocent people. Supreme Court, in fact, came down heavily on the media organizations for their irresponsible coverage. 10 years down the line, what are the changes we see in the coverage of the terrorist operations? Has media learnt its lessons, and are proper guidelines in place? Joining me now, some of the people who've seen the 26/11 attacks very closely. Rahul Mahajan, editor-in-chief with Rajya Sabha Television, another senior journalist, Sudhir Ranjan Sen and Ajay Suri, both senior journalists who actually were on the spot. I welcome all of you on this special show, Lest We Forget. And I'll begin with you, Rahul. What are the memories which you really have? जब आपको पहली बार जब आपको ऑर्गेनाइजेशन से आपके बोला गया होगा कि अब आपको जाके कवर करना है, so what was that first instinct which actually just led you to the spot, and what was your first experience there? देखिए, बहुत समय नहीं होता है इस सारी चीज़ों में. टेलीविज़न का जो माहौल मैंने देखा है, वो उसमें बहुत जल्दबाजी में चीज़ें की जा रही होती हैं. जब ये खबर आई कि इस तरह का कोई हमला हुआ है, तब तक ये भी क्लियर नहीं था कि ये एक गैंग वॉर जैसा कुछ है, कोई एक इंसिडेंट है, या फिर ये एक्चुअल टेररिस्ट जो आयाम था, मतलब कितना बड़ा ये चीज़ है, ये किसी को नहीं पता था उस वक्त तक. और उसी के हिसाब से रिएक्शन हो रहा था टेलीविज़न चैनल्स में भी. जहाँ तक मुंबई ब्यूरो की बात है, वहाँ पर कवरेज की जो भी वहाँ से पिक्चर्स आ रही थी, शॉट्स आ रहे थे, वो दिखाए जा रहे थे. और धीरे धीरे ये समझ आ रहा था कि ये सच में कोई बड़ा जो है घटना है, और इसमें टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं, और ये बहुत बड़ा अपने आप में होने जा रहा है. जब ये रियलाइजेशन कुछ घंटों में हुआ, उसके बाद एक्टिवेशन जो ज़्यादा एक्टिविटी हुई वो यहाँ पर टेलीविज़न चैनल्स के न्यूज़ रूम में हुई. और फिर ये कहा गया कि मल्टीपल टीम्स जो हैं यहाँ से, दिल्ली से भी भेजी जाएं, बिकॉज बहुत ज़्यादा जगह पर अलग अलग चीज़ें हो रही हैं. तो उसी में मुझे कहा गया कि आप जाइए. तो तुरंत उसी वक्त जो भी अवेलेबल एयरक्राफ्ट था, जो हमें फ़्लाइट मिली, उसके ज़रिए हम मुंबई पहुँचे. और मुंबई में हमें पहले ये तय करना था कि हमें कहाँ जाना है. इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही थी. ये पता चल रहा था कि 2 5 स्टार होटल, एक ताज, एक ट्राइडेंट, इसमें चल रहा है. पता चल रहा था लियोपोल्ड कैफ़े में वो हुआ है, दूसरे चाबाड़ में हुआ है, फिर रेलवे स्टेशन. तो इस तरह से मल्टीपल हो रहा था. तो फिर ये तय करना हमारे लिए मुश्किल था कहाँ जाया जाए. तो उस तरह से तय किया गया कि एक बार जब ये हो गया कि ताज में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, तो मुझे ताज में स्टेशन किया गया. मुझे कहा गया कि आप ताज होटल के पास जाके कवरेज करें. और वहाँ पर उसके बाद पिक्चर्स हैं हमारे सामने कि वहाँ क्या हो रहा था और किस तरह से घटनाएं घट रही थी. But 10 years down the line, Sudhir, now when you look back and the way media covered the whole incident, are you in a position to say that media was really insensitive? Because as Rahul just mentioned, कि जो भी चीज़ सामने आ रही थी, उसको बस everyone was grasping onto that little piece of information which was trickling in. But now when you look back and the way the sensitivity over issues has increased, do you think media was really insensitive at that point of time? Well, I think it's a mix and match of both. Media was not prepared for what was happening. Media didn't in the wildest dreams think that this is what the situation is and this is how they're going to perhaps end up, say, helping handlers in Pakistan. If I were to look back and say whether are we better prepared, do we know what to do if touch wood never happens, but if we face a situation like this again, I feel that it'll be a mixed bag, because the sheer competition that we see, the one-upmanship that we see, oh, we got the visuals first, oh, we got there first,
That is going to be the problem. Right. As Sudhi just mentioned, that there was a mad race for TRP. That who is going to see show the first visuals? I remember having seen those screenshots of where little bulbs inside the Taj hotel, which suddenly got lighted up, and all the cameramen used to focus on that one point, thinking that maybe the terrorist is inside. Now, if at all, as Sudhi was saying, that if God forbid, if an incident like that happens. Don't you think that media is now better prepared? Because obviously at that point of time, it was a first experience when an incident of that scale happened. And now you also have strict guidelines which are in place from the government side. So don't you think that will make a difference? Or as Shruti says, it's going to be a mixed bag? I'll tell you what, Neelu, if anything else, the mad rush for TRP has just become worse now. It has accelerated. Okay. And secondly, what I feel is, the Mumbai attack was perhaps the biggest test for the Indian media. Because unlike other terrorist attacks where, a bomb is thrown, people die and, things come back to normalcy, this attack actually kept on unfolding for 2, 3, 4 days. It did not just end in a jiffy. And nobody from the media was actually prepared that, this thing would go on and on and on. And then there were so many things. Media commotion, of course, was there. TV channels now as well as then. They were vying for, who will get the first shot, who will get the first interview, the very first bite. So there was this mad rush which is still there. And I don't really think that we have learned too many lessons from, Mumbai attack. बट राहुल, आप उस जगह पर गए थे जहाँ पर ये सब जिस समय अटैक शुरू हुआ था, ज़्यादातर टीम्स जो उस समय थी उनके पास कोई बैरिकेडिंग या कोई ऐसी बाउंड्री लाइन नहीं मार्क की गई थी. जैसे नॉर्मली कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो बोला जाता है कि आपको इसके बियॉन्ड नहीं जाना है. लेकिन ताज से जो जितने भी विजुअल्स उस समय आ रहे थे, देखा जा रहा था मीडिया टीम्स वर ट्रैम्पलिंग अपॉन whatever evidence was coming across. जो hostages वहाँ से बाहर निकल रहे थे उनको भी लोग उसी समय पकड़कर और उनसे सवाल कर रहे थे. तो उस समय का जो माहौल था वो एक लैक ऑफ सेंसिटिविटी तो एक चीज़ है, लेकिन क्या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी था कि मीडिया वाज वेरी इमेच्योर टू हैंडल अ सिचुएशन लाइक दैट? I'll say that both the sides, whether it was the administration or the media, they were not prepared for such a thing. Okay. It's not so that we haven't covered terrorist operations in the past. I have myself been to Jammu and Kashmir and covered ample number of terrorist operations where encounters are happening also. But this was different. We didn't know that the things we are showing on television could help the terrorists sitting in Pakistan. They took advantage of the race of television to bring the visuals or the story first to their viewers. Right. दूसरी चीज ये थी कि कोई कम्युनिकेशन नहीं था सरकार और मीडिया के बीच में, जो कि अब बहुत डिफरेंट है. जो कि मैं आपको अब भी बताऊंगा कि अब बहुत डिफरेंट है. अब सरकार आगे आके कम्युनिकेट करती है मीडिया के साथ, जानकारी देती है. तब ऐसा कुछ नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा था, कोई जानकारी नहीं मिल रही थी. तो मीडिया की जो भूख है जानकारी की या इंफॉर्मेशन की, वो सामने आ रही थी. जहां से भी जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया गैदर कर पा रहा था वो उसे ऑन एयर किए जा रहा था, क्योंकि ना तो वेरीफाई करने के लिए कोई था और ना ही क्रॉस चेक करने के लिए कोई था कि अच्छा ये सही है या गलत है. अब इस रेस में जो है मीडिया ने जो कुछ किया वो इस रेस में किया कि मैं सबसे पहले विजुअल्स या फिर अपनी स्टोरी जो है वो अपने दर्शकों तक ले जाऊं. दूसरी तरफ से ऐसा नहीं है कि बैरिकेडिंग नहीं हुई थी. ताज के सामने प्रॉपर बैरिकेडिंग थी जहां पे कहा गया था मीडिया को कि आप इतनी दूर रहिए. लेकिन मीडिया में जो वो पहले करने की जो जद्दोजहद थी उसमें ऐसा नहीं था कि मीडिया ताज के पास नहीं जा रहा था. वो अलग अलग रास्तों से ताज के पास पहुंच रहा था. ताज के अंदर कॉरिडोर में भी पिछले रास्ते से कई बार घुस रहा था. दूसरी ये भी बात थी कि जहां स्नाइपर्स बैठे हुए थे उनके पास जाके मीडिया देखने की कोशिश कर रहा था कि अंदर क्या हो रहा है. तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन ना तो मीडिया पहले इस चीज़ के लिए इतना सेंसिटिव बन पाया था कि उसे ये अब पता है कि अगर इस तरह का ऑपरेशन होता है तो अगर मीडिया ये सब करेगा या हम ऐसा करेंगे तो उसका फ़ायदा किसे मिलने वाला. अब ये पता है, लेकिन तब तक ऐसा नहीं पता था. पर इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अपने लोगों को ऐसे ऑपरेशंस को कवर करने के लिए प्रिपेयर करता है अब भी? क्या उनको ये बताया जाता है कि
एक वॉर लाइक सिचुएशन में किस तरह से काम करना चाहिए, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में तो नहीं बताया जाता। तो ये एक बड़ा सवाल है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। क्या उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम किया जाता है? क्या उन्हें ये बताया जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में हैं तो जो फायरिंग हो रही है वो आपकी तरफ भी आ सकती है, आपको भी लग सकती है, और आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए रिपोर्टिंग कर? क्या आपको रिपोर्टिंग करते हुए किन बातों का ये ध्यान रखना चाहिए कि आप ये रिपोर्ट करें, ये नहीं करें? तो इस तरह की जो गाइडलाइंस है मीडिया के अंदर, वो भी अब जो है हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत कम है। अगर उसके एग्जाम्पल्स अभी भी देखे जाएं, जब आप नक्सल इलाकों में कवरेज के लिए जाते हैं तो भी कोई खास गाइडलाइंस मीडिया के पास नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि किस तरह से आप जाएं। क्या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अपने लोगों को प्रोटेक्शन गियर्स देता है ऐसी जगह पे जाने के लिए? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया के अंदर उसकी सेल्फ रेगुलेशन में आना या सेल्फ जो एक गाइडलाइंस है उसमें आना ज़रूरी है। In fact, when Rahul just spoke about the self-regulation bit, and after 26/11 attacks, there was a dire need, which was felt amongst the media organizations, that there should be some guidelines which should be in place. Supreme Court also came down heavily on the media organizations, blaming them completely that you all were very careless. Now, when you talk about the fiascos at that point of time, people were blaming the media, people were blaming the government, people were blaming the agencies like NSG, the Navy, who were cross-talking with each other, holding press conferences which were out of context. Which was the biggest fiasco? Which was the biggest blunder now when you look back? I would say it was, there was you can't blame anybody in particular for the biggest, you can't say this was the underlining factor, the biggest fiasco, but it was a free-for-all. It was a complete free-for-all because the Marcos commandos had been put in, but the Marcos commandos had been put in at that point of time to do perimeter security. They were not allowed, they didn't go in and do the interventions. The NSG came in and did the interventions. But we did see the Marcos coming out and holding a press conference, giving out details. And we saw the army coming out and giving the details. So, and it was much, much later on the third day, I think, or the second day, I think that we did see the Home Ministry reacting and putting up somebody to brief out here. Special Secretary Internal Security coming out to brief. As Rahul was saying, yes, things have changed. But has it changed enough? We did not see much in terms of flow of communication from the government in case of the Pathankot attack. There was information, yes, but it could have been better. Right. But when it comes to the flow of information, I remember right from day one, from that very hour, just I think 2 or 3 hours into the firing, and all TV channels were saying it's a war on India. That was the headline and the stings which we saw across the TV channels. So, and they were saying it's almost like a 9/11 on India. So when you already knew, and that is most intriguing, I'm going to ask you on that, is that when you were calling it a 9/11 on India, you already had a model or a style of coverage which was already there, the way American media had covered it. So what was stopping the Indian media of not going that way? Of course, the lack of information was there, lack of sensitivity, as Rahul pointed out. But what was it that, just we were stopping short of that finesse? I think total lack of preparedness at one level. And also on the ground, lack of cohesion, lack of coordination between government agencies on one side and the media on the other. And the way Rahul put it, even the simple do's and don'ts which a journalist in such a situation, how he should or he should not behave, all these things have to be told to him or her by the organization. Even these very vital points were missing. So there was like total chaos all around. And this was a big test for the media, like I said. I mean, things were happening at such a fast pace, and everybody, the media persons were scrambling for, unka best bite, unko pehla bite, unko kab milega. Whether it was a cub reporter or a senior journalist, it was a different war situation going on, a kind of a war among the media people. Who will get the first bite? Who will get the first exclusive of the day? Who will get the first interview of Commissioner of Police? And there was like utter lack of coordination at every level. And I'll tell you one, till about 2 or 3 decades ago, Neelu, there used to be a course of war correspondence. I'm sure Rahul and others would. It was there. It was mandatory for anybody who is covering the border areas. I think the time has now come
for the government as well as for the media houses to somehow revive this kind of a program and tell your reporters, sanitize the reporters how to behave, in such situations. Right. I remember in the initial days when 9/11 happened, Rahul, and उस समय एक टर्म आया था टेरोविजन, जिसको कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादातर ये लोगों को पता है कि टेररिस्ट्स मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी जो दहशत है उसको फैलाने के लिए, और ये सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को पता होता है। लेकिन फिर भी जो एक फियर्स कंपटीशन होता है, जैसा अभी अजय ने बोला कि फियर्स कंपटीशन के चलते सब पहले करना चाहते हैं, तो जो सेल्फ रेगुलेशन है, आज जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जो कि हमें बोला गया है कि हम लाइव कवरेज किसी भी एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन का अब हम नहीं दिखा सकते, हमें आधा घंटा उसको डेफर करना पड़ेगा। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? गवर्नमेंट चैनल्स को छोड़ दीजिए, लेकिन क्या प्राइवेट चैनल जिनमें अभी भी एक बहुत मारामारी है टीआरपी को लेके, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? देखिए, अगर किसी भी गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली बनाया जाए, उसे लागू किया जाए, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि मीडिया उसे फॉलो नहीं करेगा। अगर कोई गाइडलाइंस बनाई गई है सरकार की तरफ से, उसे फॉलो किया जाएगा। देखिए, 26/11 बिल्कुल अलग था, आप उसे 9/11 से कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ कोई हॉस्टेज सिचुएशन नहीं बनी हुई थी, ठीक है। 26/11 में हॉस्टेज सिचुएशन थी और बाकायदा एक जगह थी जहाँ पे टेररिस्ट होल्ड अप थे, उनको निकाला जाना था, और मीडिया को ये नहीं पता था कि ऐसे सिचुएशन में जो है किस तरह से अनफोल्ड हो रही हैं चीज़ें। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मीडिया को नहीं पता था कि उसका इस्तेमाल जो है वो जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कर लेंगी, ये देख देख के कि वो क्या कह रहे हैं। नहीं तो ये नहीं बताया जाता कि फोर्सेस अब अंदर चली गई हैं, अब हेलीकॉप्टर नहीं करता मीडिया। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोई मीडिया जो है वो एंटी नेशनल है। मीडिया इज़ नॉट एट ऑल एंटी नेशनल, दे आर विद द कंट्री। सो ऐसा नहीं होता कि अगर मीडिया को पता हो कि ऐसा करना है तो वो उसके अगेंस्ट जाएगा। ये बात और है कि एक रेस ज़रूर है मीडिया के बीच में पहले दिखाने की, लेकिन वो भी विद इन लिमिट्स है। अगर ये पता हो कि ये नहीं किया जाना है तो नहीं किया जाए। लेकिन गाइडलाइंस, जो इंटरनल गाइडलाइंस हैं, उन पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है कि ये इंटरनली बताया जाए कि ये किया जाना है और इसे ऐसे किया जाना है। जो देखिए, एक है ग्राउंड जहाँ पे रिपोर्टर्स जाके रिपोर्टिंग करते हैं, उन रिपोर्टर्स को अगर ये नहीं पता होगा कि इस तरह से किया जाना है तो लाइव सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक बार कोई रिपोर्टर बोलना शुरू हुआ तो उसको नहीं रोका नहीं जा सकता, वो लाइव चला जाएगा। वो तो बाद की बात है कि उसको बाद में रोका जाएगा, लेकिन तब तक चीज़ हो चुकी होगी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है मीडिया हाउसेस के अंदर। That's an important point which Rahul has made, and according to this global terrorist database which has just come out, I think a year and a half ago, which said that the number of terrorist operations have phenomenally increased across the world, not only in India but across the world. Now, when you talk about an increased counter-terrorist operations and the way media is covering it, then why is this kind of a coverage not on priority as far as the individual media organizations are concerned? Because not much work is happening on sensitizing the reporters, sensitizing the cameramen who are going on the field. Why is it not happening then? I mean, it's a shame. I mean, it's a shame that we don't see media houses, sorry, investing resources, as Rahul was saying, and we have seen kind of, sensitizing, building up a team. Crunch, I would say, kind of a crunch in the newsroom. जब होगा तब देखा जाएगा attitude. And also, I would say there is a serious lack of domain expertise in the media. Okay. People who, you therefore need people who cover a certain, say, terrorism or counter-terrorism or security issues, who would be much more sensitized about, maybe we should not talk about this right now. Maybe we should talk about it much later when the operation is over. Now, one thing might appear to be a great story right now, but may not be done right now. I mean, you better let the story go, wait for some time. So there is, I would say, not much thinking that is going on there. And plus, I would say you need more domain experts within the media who look at it. It cannot be just, you also cover it. You go, okay, fine, something is happening, run in, cover it. It cannot be that. So, but ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, क्योंकि जब मैंने अपना जर्नलिज्म का करियर शुरू किया था और मैं टीवी में आया था, तो भी स्पेशलाइजेशन का ज़माना था कि एक बीट पर स्पेशलाइजेशन की जाती थी। वो कहीं ब्लर हो गया। अब किसी को भी किसी भी जगह पे अगर आप भेजेंगे तो उसमें इस तरह के खतरे और बढ़ जाते हैं। दूसरा एक पॉइंट जो मैं और कहना चाहता हूँ, ये खतरा और बढ़ गया है विद डिजिटल मीडिया के बहुत तेज़ी से बढ़ने से।
अब सिर्फ टीवी पे ये खतरा नहीं है, डिजिटल मीडिया में और तेजी से चीजें हो सकती हैं। राइट। तो वो भी हमें देखना चाहिए कि वहां पर किस तरह की गाइडलाइंस जो है आनी चाहिए। लेकिन जब आप डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, कैन यू रियली पुट कर्ब्स ऑन व्हाट द सोशल मीडिया वुड बी डूइंग मे बी इन अ सिचुएशन लाइक 9/11 और मे बी 26/11? How are you going to curb the social media? What if social media starts beaming it live? You have things like Facebook Live. You can go live through various means now. Would it be now more challenging? I don't think you can actually curb the social media. It's more like a bull in a china shop. It's already gone on a massive rampage. But there is one point, Neelu, which I want to make. That is, the media houses have to put some kind of a protective shield for their journalists. Okay. I don't think any media house in this country has, provided for a decent insurance cover for their journalists who go out on such dangerous assignments. So first of all, the buck stops at their door. And it comes Not down a single media house. I can say it with confidence because I've worked in more than 7 such media houses. Not a single 1 rupee insurance for anybody. So how can we at this point of time really goad the management, goad the media organizations कि अब आपको इनका इंश्योरेंस कराना बिल्कुल मैंडेटरी है, you need domain expertise, all these points which we have discussed. At the end of 10 years when we are discussing a program like this, what do we carry back today? राहुल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे बाकी इंडस्ट्री में गाइडलाइंस है लेबर को लेकर, उसी की तरह की गाइडलाइंस मीडिया में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसके लिए क्या एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स होनी चाहिए, क्या आप उन्हें किस तरह की फैसिलिटीज़ देना मैंडेटरी है। अगर इस तरह की चीज़ें मीडिया में आएंगी तो मीडिया जो है और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाएगा। दूसरा ये भी ज़रूरी है कि इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो मीडिया की मुश्किलें हैं कि वो अब ये मीडिया हाउसेस की भी मुश्किलें हैं कि उनकी जो मार्जिन्स है बहुत कम हैं ऑपरेट करने के, तो उनको मुश्किल होती है उसको इन्वेस्ट करने की। तो ये ज़रूरी है कि जो मीडिया का कोर बिजनेस है जर्नलिज्म का और कवरेज का, उसमें इन्वेस्ट किया जाए और लोगों में इन्वेस्ट किया जाए। इस वक्त जो अभी भी सिचुएशन है कि जो छोटे छोटे मीडिया हाउसेस हैं वो बहुत कम पैसे में लोगों को हायर करते हैं और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। उस क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज़ होने से ये भी होता है कि क्या जा रहा है ऑन एयर वो भी संभालना मुश्किल हो जाता है। But Chudi, what is the biggest learning lesson now which we draw? I mean, when you go back today and if you have to tell the people that what has India learned after 26/11, what would you say? Initially you said there's going to be a mixed bag, but when we have to carry back a message, what do we really tell the people today? As a reporter, my lesson, as I've, because I've looked at this area for some time, is what you do not report is much important than what you report. That is the first thing that journalists, reporters going out into these kind of assignments or reporting on security need to consciously keep that in their mind. What you do not report is very, very important. No, but when you were, then again there's a thin line, which when you say that what you do not, if now taking for example, those shots where NSG commanders were being lowered, on the roof of Nariman Point. I completely agree with the fact what Rahul is saying, and this is what I've been saying for a very long time when people have said the media behaved in an anti-national manner. The fact is the media did not know at that point of time that, well, what they are showing is being misused, is being used in Pakistan. And as soon as that became very clear, the government sent out those directions, look, what you guys are doing are helping them. People turned around. So I believe it has to be a collaborative attempt. There cannot be an adversarial relationship between the government and the media, at least in these incidents where we are, covering counter-terror operations or anti-terror operations, or so to say investigations into, terrorism-related cases. Right. There has to be a kind of an understanding that is there, that you do not go and spoil up or report something that helps the other side. So it has to be more collaborative. And on the side of the media, I think the take back is invest on people. You have to develop a core understanding. Right. But despite all the guidelines being in place, what we saw happened in Pathankot. Right. Still, the TV channels went ahead. They did few hours of live coverage, and then they had to retract. So, I mean, there is always a possibility for media to err at that point of time. Yeah, I think what is really required is, holistic thinking and holistic behavior on the part of media. But let me also tell you, Neelu, in the last couple of years,
the goalposts have changed drastically. You know something? Earlier it used to be that a reporter is on the field, a TV reporter, let's say, and he or she will file the report, and that report will come in a prime time or say in the next bulletin. But nowadays, I mean, that doesn't mean anything, because even before the report comes on a TV channel, the social media, whether it's Has already YouTube started or showing it. anything, they've already shown it. So, like I said, the mad race has just become madder. So, I think the important thing now is to introspect and judge for ourselves what is good and what is not good, and also for the media houses to, you know, to give out some kind of guidelines, and also give proper training to the journalists as to how to conduct themselves in such situations. Absolutely. So it needs a holistic thinking when it comes to the coverage of any counter-terrorist operation. Remember, it goes without saying, but every tragedy is a learning lesson, and therefore 26/11, of course, was a big learning lesson. And as has been emphasized by all the three guests here, that we need a holistic thinking, we need to invest in reporters, and that's where the media probably will not have the possibility to err. Thank all of you, Ajay Suri, Shruti and Rahul. It was a pleasure talking to you on another special episode of Lest We Forget. Goodbye and thanks for your time.